Assalamu alaikum everyone. Today our group including Maleha, Nimra, Neha and myself Myra are going to present on the Great Depression. In this presentation we will be exploring the causes, major events, impacts, government responses and long-term effects of this historic crisis. Let's start with a little introduction. The Great Depression was a global economic crisis that began in 1929 and lasted about a decade, marking the longest and most intense depression in modern history. Starting in the US, it spread worldwide, causing sharp declines in production, massive unemployment, and severe deflation. Its impact was especially profound in the US, reshaping economic policies and institutions globally. Now, we will discuss what caused the Great Depression. Firstly, the stock market crash. Many people believe the Great Depression started with the stock market crash of 1929, but that's not entirely true. The crash did not directly cause the depression, instead, it acted as a major trigger that worsened the economic decline. In October 1929, millions of investors lost huge amounts of money, which severely hurt people's confidence in the economy. As a result, people began to cut back on spending and investing, which made the downturn even deeper. Moving to the next point, which is the banking failures, the loss of confidence after the crash spread to the banking system, which was already unstable. Many banks had very small reserves, so when people rushed to withdraw their savings, the banks could not handle it. As banks began to fail, people lost their money, making them even less likely to spend. Together, these factors pushed the economy into a deeper and longer lasting crisis. Assalamu alaikum, this is Maliha. As Myra very well explained about causes of depression, but I will add few more points in causes of depression like overproduction and reduction in consumer spending. So, overproduction in both sectors, industry and agriculture, led to a surplus of goods which drove prices down. However, with wage cuts and unemployment rising, people couldn't afford to buy even essential, um, leading to steep decline in consumer spending. And talk about decline in international trade. So, the 1930 smooth holiday tariffs worsened the depression by imposing the high tariffs on imports to protect U.S. industries. But other countries retaliate with their own tariffs, leading to a global decline in trade and worsening economic conditions. Inequality was another factor of causes of depression. A small wealthy population held most of the resources, leaving the majority with a limited purchasing power. This imbalance reduced, which contributed to the economic decline as goods went unsold and company faced losses. Okay, last point of causes of depression is government policy failure. Basically, policy failure by the US Federal Reserve compounded the crisis. Instead of stimulating the economy, the Fed tightened the money supply, making borrowing harder. Additionally, inadequate bank regulation allow risky banking practices, leading to more failures. Thank you so much for listening me. I hope you understand about causes of depression. Assalamu alaikum, myself Nimra. Today I would like to tell you about the major events during the Depression. The Dust Bowl. In the early 1930s, the Dust Bowl disaster hit the US Midwest. Severe droughts and poor farming practices led to the storm that devastated crops. Many farmers lost their livelihoods, which added to the widespread economic struggles. The second major event was the election of Franklin D. Roosevelt. The election of Franklin D. Roosevelt in 1932 marked a shift towards government intervention. His New Deal focused on relief, recovery, and reform. This approach reshaped the role of government in addressing economic crisis and provided essential support to the American public.
Another major event was a bank holiday. In 1933, Roosevelt declared a bank holiday, temporarily closing banks to stop the financial collapse. During this time, banks were inspected for stability and only healthy banks were allowed to reopen. This restored public confidence in the banking system. Thank you. Assalamu alaikum. I am Neha and today I am talking about major impacts of mass unemployment, poverty and homelessness. ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका में 1930 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा किया। इसके नतीजे में 25% लोग अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गार हो गए, लोगों के बिज़नेस बंद हो गए एंड पीपल लॉस देयर होम्स, लोगों ने अपने घर खो दिए, पोवर्टी यानी गरीबी और होमलेसनेस में इजाफ़ा हो गया। होवरवेल्स नेम की मेकशिफ्ट यानी आरजी शेंटी टाउन्स बनाए गए ताकि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको शेल्टर फराहम किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं मेजर इम्पैक्ट्स साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की। ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों की दिमागी और समाजी ज़िंदगी पर भी बहुत बुरा असर किया। अब हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ने एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाया। दूसरा, फैमिली टेंशन से यानी घरेलू तनाव में इजाफ़ा हुआ और सोशल स्ट्रक्चर्स पर भी दबाव पड़ा। फिर इसके नतीजे में लोगों ने अपनी मुश्किलात के हल के लिए पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स और पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म की तरफ रुख किया और लोगों का होप और कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आज भी हमें समझने के लिए ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त मेंटल हेल्थ को भी जहन में रखना ज़रूरी है और सोशल स्ट्रक्चर को मज़बूत बनाना चाहिए। लोगों को होप और कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। इस टॉपिक में हम ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कितने सेंसिटिव हो सकते हैं एंड पीपल सॉर्ट सॉल्यूशंस टू देयर हार्डशिप और इनको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस न्यू डील प्रोग्राम्स का। इस क्राइसिस ने लोगों की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया, लेकिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका में न्यू डील प्रोग्राम शुरू किया। इनका मकसद बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देना और इकोनॉमी को मजबूत करना था। वर्ल्ड्स प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन WPA ने 8 मिलियन लोगों को रोज़गार देने के लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम किया। सिविलियन कंजर्वेशन क्रैप्स CCC ने 3 मिलियन यंग लोगों को काम देने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स बिल्ड की, स्कूल्स और पब्लिक फैसिलिटीज़ पर काम किया। टेनेसे वैली अथॉरिटी TVA ने टेनेसे रिवर पर डैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की। इन प्रोग्राम्स ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार निभाया। प्रेसिडेंट के न्यू डील प्रोग्राम ने अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट के साइज़ और स्कोप को बढ़ाया और इकोनॉमी में गवर्नमेंट के रोल को भी आगे बढ़ाया। हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC का क़याम बैंकिंग सेक्टर को स्टेबल करने के लिए किया गया। FDIC ने बैंक डिपॉजिट को इंश्योर किया, जिससे लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि उनकी सेविंग्स सेव हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी आई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रस्ट रिस्टोर हुआ। FDIC का रोल बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। बैंक रन्स को रोकने के लिए ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इससे बैंकिंग स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। अब हम बात करते हैं FDIC के बेनिफिट्स की, जिसमें बैंक रन्स को रोकता है, FDIC बैंक रन्स को रोकता है, बैंकिंग स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, लोगों का ट्रस्ट रिस्टोर करता है। इस तरह FDIC ने बैंकिंग सेक्टर को स्टेबलाइज किया और लोगों का ट्रस्ट रिस्टोर किया। Government responses welfare state development. The depression led governments to develop welfare programs like unemployment insurance and pensions.
These programs offered a safety net for those struggling, marking a significant shift towards government involvement in social welfare. Government responses, monetary policy changes. To stimulate the economy, central banks like the Federal Reserve reduced interest rates, making loans more affordable. They also expanded the money supply to encourage borrowing and investment, providing much needed liquidity to support economic recovery. अब हम रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी एक स्लो प्रोसेस था। न्यू डील प्रोग्राम ने इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान प्रोडक्शन में सर्ज यानी इजाफे ने फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर किया। लॉन्ग टर्म में ग्रेट डिप्रेशन ने प्रोफाउंड चेंजेस यानी गहरी तब्दीलियों को जन्म दिया, जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कायम किया, गवर्नमेंट के रोल को रेगुलेट करने में मजबूती की और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और सेफ्टी नेट्स को इन्फ्लुएंस किया। ये शिफ्ट्स आज भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और सेफ्टी नेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। The Great Depression taught us vital lessons about economic resilience and policy. First, it highlighted the critical role of government intervention during economic downturns. Secondly, it underscored the need for regulations to maintain financial stability and prevent risky practices. Another key lesson was the importance of social safety nets to protect the most vulnerable and prevent widespread sufferings. Finally, it reminded us that global economies are interconnected and economic crises require coordinated efforts across nations. To sum up, the Great Depression was more than just an economic crisis. It was a turning point that reshaped policies, economies, and societies worldwide. The steps taken in response laid the groundwork for modern economic systems and established protections that continue to benefit us today. Thank you all for taking the time to listen to our presentation. We hope we have given you a deeper understanding of the Great Depression and its lasting impact.